Hello बच्चों, so let us see this question. In which of the following features cycus resembles with angiosperms? Option A, presence of vessels. Option B, circinate venation. Option C, dichomotously branched leaves. Option D, pollen tube is the carrier of male gametes. So let us solve this question. Now cycus and its xylem do not have vessels. साइकस के पास जाइलम तो है बट उसके पास वेसल्स नहीं है. ओके, सो इट हैज ओनली ट्रेकीज. सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. Then we have option B as circinate venation. So venation is basically the arrangement of veins and veinlets in leaf. So यहाँ पर जो venation है is that circinate venation. So what is circinate venation? It is the manner in which fern frond emerges. Basically यहाँ पर क्या होता है, लीफ जो होती है वो रोल हो जाती है एपेक्स की तरफ से. इट रोल्स टुवर्ड्स द बेस, कुछ इस तरीके से इट रोल्स. So this type of venation is called as circinate venation. But in cycas there are two types of leaves. Foliage leaves and scaly leaves. Foliage leaves में ये बेसिकली पिन्नेट है. ओके, scaly leaves are basically spirally arranged, but they will not have this type of circinate venation. So ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. Then C is dichotomously branched leaves. यहां पर क्या होता है, what is this branching? In this branching, the branches form as a result of equal division of terminal bud. So that type of branching is called as dichotomously branching. Okay. So यहाँ पर जो साइकस है वहां पर ऐसी ब्रांचिंग देखने के लिए नहीं मिलती है, which is present in angiosperm. So this is also not a right answer. Now pollen tube is the carrier of male gametes. Now what happens in case of cycas is, so cycas is basically a gymnosperm. So यहाँ पर the pollen grain acts as a carrier of non-motile male gamete and transfers it to the female flower where fertilization takes place. So this pollen tube is also seen in case of angiosperms. So ये pollen tube आपको cycas which is a gymnosperm इसके केस में देखने के लिए भी मिलेगी. So यही हमारा राइट आंसर है, that is option D. That means कि cycas में और angiosperms दोनों में ही pollen tube क्या करेगी, it will carry the male gametes, because ये जो male gametes हैं ये कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं, और ये पोलन ट्यूब जो है ये इनको ट्रांसफर करेगी टू द ओव्यूल वेयर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. सो यहां पर हमारा राइट फाइनल आंसर है ऑप्शन डी. आई होप इट इज क्लियर टू यू. बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स.